Okay friends, good morning. And in my earlier videos, we have seen the information about the poem Song of the Open Road. There we have seen the explanation of the poem, and in the second part we have seen the appreciation of the poem. Now the third part, that is very important, poetic devices. Here today we will learn about the figures of speeches. Now the first figure of speech, that is the paradox. Now what is paradox? One example that is given in the poem, it is old memory, old delicious burdens. Now can you believe that the burdens can be delicious? Burden cannot be delicious. But actually what the burden he is talking about? This is actually the burden they are going to become delicious for him, because these are the sweet memories of the people. Okay, again he actually wanted to remember the places he would or he had lived in. So okay, he wanted to remember them, and so here the expressions which are made here, the old delicious burdens, here this delicious burden, okay, that particular expression, it looks like that it is a seemingly contradictory. Okay, so seemingly contradictory expressions, they are used in the poem. Okay, and so because of this contradictory expression here, we can say that these are the opposite ideas. Okay, these are the opposite ideas. Okay, and so this particular expression makes it seem absurd. Okay, so it becomes absurd, or again we can say that it becomes unlikely. And so here in this way, when such opposite ideas they are employed in a poem, then it is identified as a paradox, figure of speech. Okay, now here we have to remember that opposite ideas, they do appear in antithesis also. But here in antithesis, some type of connective or a conjunction that is used. Sometimes you will find and, or sometimes you will find but, sometimes you will find though. Such type of some connectives, they are used in two opposite words or ideas. Okay, so here two opposite ideas, and they are placed in such a way that they seem to be absurd or unlikely. And so here this old delicious burden, it becomes the example of paradox figure of speech. Okay, now the another one, the figure of speech that is used here, it is metaphor. Now what is metaphor? Okay, what is metaphor? Actually one expression there is the road. The road is the expression it is used here in the poem. Actually the road doesn't mean only road. It is not only road. Okay, it is not. Now what is talking about? The road symbolizes the road of life. Okay, so it is called the road of life. And here we can say that one expression more, that is the open road. This particular expression that is used in the poem. Now what do you mean by this? Okay, when we see open road, at that time actually it is a wider meaning word. Okay, so a comparison that is made of open road, that is a road of life. So here is the comparison. Okay, we can say there is a kind of comparison that is made in between these two. And how the comparison is made? A comparison that is made implicit. Okay, implicit comparison, that is we can say it is indirect comparison. Okay, and because of this indirect comparison, there is the figure of speech metaphor. Okay, so this is the example of metaphor. जब यहाँ पे indirect comparison होता है तो metaphor होता है, direct comparison जब होता है तो उसे हम simile कहते हैं, और वो direct comparison as, so as, like इन words के द्वारा दिखाया जाता है, और यहाँ पे जो कंपैरिजन किया हुआ है वो एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में अनदर पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी विल लर्न, that is free verse.
Okay, I will use the half page again here. The free verse. So what is free verse? You might have heard about the blank verse also, but free verse is different than blank verse. As we have seen in the poem Song of the Open Road, here Walt Whitman, he is called the father of free verse. Now what is free verse? It is actually free from the limitations. Okay, so it is free from the limitations of the regular meter. Okay, it is free from the limitations of a regular meter. Again, it is free from the rhyme. Okay, so it is free from rhyme. Now you might have come to know that you might have the question that what is a meter. Okay, so what is a meter? Meter actually it is a feet, means actually the straight syllable and again the soft syllable. Okay, so one after another, one straight, one soft, one straight, one soft, one straight, one soft. Like here it is called 1 feet. Okay, so 1 meter. Now in blank verse we find such type of 5 pair. Okay, so they are called the iambic pentameter. Penta means 5. Okay, so here there we find the iambic pentameter. Now here it is actually free verse, it is better than the blank verse, because here actually it is free from such type of regular meter, or again it is free from the rhyme also. There is no need to rhyme them. Again here actually it is without meter, but one should remind that it is a kind of artistic expression. Okay, so it is a kind of artistic expression, and it can give its own shape. Okay, so it can give its own shape, it can give its own shape to the poem. Means a poet who is using free verse, he can give his own feelings, he can express his own feelings in his own way with the help of the free verse. Okay, the next part, that is the repetition. Now how there is a repetition figure of speech, the another figure of speech, that is repetition. Now how there is repetition? Actually in the poem there is the expression no more. This expression is used in the poem. Now this no more, this expression appears twice in the poem. Okay, when a word or more than one word, means a phrase, if it is repeated as it is, then it is called the repetition figure of speech. One more example, that is here, carry them. Okay, so this particular expression has also appeared twice in the poem. Now actually we will find that filled with them, filled them, such expressions they are there. Now here the repetition figure of speech, what is the importance in the poem? With the help of the repetition figure of speech we find a kind of emphasis. Okay, so emphasis that is made, and again here a kind of a sound pitch that is created, and this sound pitch is also pleasant. Okay, so this pleasant sound pitch which is created because of this repetition figure of speech, and so that is also very nice to read, and so it creates a kind of rhythm and again a pleasant tone that is created in the poem. And so here this is the importance of the repetition figure of speech. Then again in the poem we find the use of I. Okay, so I is used, so this is a special use. Okay, this is a special feature of the poem that we find here. Now why here, a question that is used, that why I is used. Okay, now there we come to know that the poet is talking about actually he is talking about his own self, we can say. Again he is talking about the freedom, actually freedom, that is the spirit of the poem. Again he is talking about the self identity that he is talking about,
and again here he is talking about the every individual. Okay, so he is talking about the every individual. Okay, individual. Okay, now here he's talking about the every American, and so I, that is used here in the poem. So I stand for self, I stand for freedom, I stand for self identity, I stand for every individual. Okay, now here the poem is written about the self, oneself, and so here the poem has the special use of I. Okay. Okay friends, now the next question from the examination point of view, it is about the creativity. Okay, now what is creativity? This particular creativity question, it is asked for 2 marks. Okay, this creativity question, actually in this poem we are given one line. Okay, one line, that is the open road leads to my college. Okay, आपको ऐसी लाइन दी हुई है यहाँ पे, और अभी वो आगे बोलता है कि फ्री वर्स टाइप में आपको 4 या 6 लाइन आपको लिखनी है। अभी जब ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखना होता है। इससे आपको जो एक लाइन अगर यहाँ पे दी हुई तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सा टॉपिक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक डीप मीनिंग छुपा हुआ है कि द ओपन रोड लीड्स टू माय कॉलेज। अभी यहाँ पे और एक लाइन दी हुई है वहाँ पे, नेक्स्ट लाइन, जिसमें वो कह रहा है यहाँ पे कि एवरी डे आई ट्रीड विथ द बैग ऑफ बुक्स। ओके, एक और एक लाइन आपको दी हुई है यहाँ पे। अभी आगे में क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दी ओपन स्काई चीयर्स फॉर मी। ओके, दे वेलकम मी to the world, and again I can write where knowledge only rules, and at last, and I get lost in them as a fool. Okay, now ruleful, again the me, the world. Here such type of the lines that I have used, actually they are also quite similar to the free verse pattern. Okay, the another thing that is in the poem, it is the blog writing. Okay, now what is a blog? Last year we have seen this blog writing part. Now in blog writing we have to create a blog. Now this blog, actually we have to plan for the blog, create the outline for the blog, and again make a research for the blog and create the attractive title. Okay, so we have to create the attractive title for the blog. Now in this blog there is the headline, then there is the headline that is that should be actually very attractive, as well as it should be informative. Okay, so these two qualities that the headline should have. Then after headline there comes the introduction. Okay, so there are the 3 parts are there. First one, the introduction. The second part, that is called the lead paragraph. Okay, and the third part that comes, or that is the concluding paragraph. Okay, so it is called the concluding para. These are the 3 parts. कौन से 3 parts है यहाँ पे? एक है introduction, दूसरा part है वहाँ पे lead, और तीसरा जो है वो है वहाँ पे concluding para. Okay,
अभी यहाँ पे हमें और से ब्लॉग में क्या करना होता है, वहाँ पे वी हैव टू यूज़ इमेजेस। ओके, आपको यहाँ पे इमेजेस यूज़ करनी होती है। उसके बाद में फिर और से यहाँ पे कुछ फ्लो टाइप में एक्सप्रेशन आपको देना होता है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स टॉपिक का। उसके बाद में सिंपल और शॉर्ट टाइप के सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे और एक खासियत है यहाँ पे कि आपको जो कुछ रिपीटेशन है यहाँ पे, ये रिपीटेशन को आपको टालना होता है। तो इसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में फिर आपको इनको रिपीटेशन तो नहीं हुआ इसके बारे में आपके थोड़ा सा एक आपको प्रिकॉशन लेनी होगी। एक लास्ट में जो ब्लॉग जब एंड होता है तो वहाँ पे एंड में एक क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पे, यानी एक तरह से क्यूरोसिटी क्रिएट करने का वो थोड़ा सा एक प्रयास रहता है वहाँ पे। तो मैं आपको एक ब्लॉग की आपको एक लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे एक कुणाल चांदीवार करके मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बहुत ही अच्छा एक ब्लॉग तैयार किया उसने। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक आपको ब्लॉग कैसा राइटिंग किया जाता है वो आपको मैं वहाँ पे देने वाला हूँ। इसके बाद में एक लास्ट पार्ट की तरफ आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एक लास्ट पार्ट जो है वो है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। ये एक्सपेंशन ऑफ आइडिया जो होता है वो एक तरह से यहाँ पे भी आपको 3 पार्ट मिलेंगे आपको। द फर्स्ट पार्ट दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको एक प्रिकॉशन लेनी होती है कि उसकी जो बिगिनिंग जो है वो इम्प्रेसिव रहे। तो इम्प्रेसिव तरह की एक आपको बिगिनिंग करनी होती है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है यहाँ पे मिडल कहलाता है वो। तो मिडल में क्या होता है, वहाँ पे मिडल में आपको एक तरह से फोकस किया जाता है। फोकस इज ऑन द क्लेवर यूज ऑफ द वर्ड्स। ओके ओके, ऑन वर्ड्स। उसके बाद में यहाँ पे एक तरह से इवोल्यूशन ऑफ आइडिया रहती है। यहाँ पे आपको एक कन्विंसिंग मैनर में आपको आइडिया को एक्सप्लेन करना होता है। और फिर थर्ड पार्ट जो आता है स्टूडेंट्स, वो थर्ड पार्ट जो होता है वो कहलाता है एक कंक्लूजन। ओके, तो इसको कंक्लूजन कहते हैं। तो वो कंक्लूजन जो रहता है वो किसी प्रोवर्ब वगैरह से भी यहाँ पे उसको एंड किया जाता है। इसके बाद में आपको एक थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये जो मिडल पार्ट जो होता है ना, तो ये मिडल पार्ट को इसको और से कोर कंटेंट भी कहते हैं इसको। सो दिस इज कॉल्ड एज द कोर कंटेंट। सो हियर इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड दैट इज मिडल, थर्ड है यहाँ पे कंक्लूजन। इस तरह से यहाँ पे हम ये एक्सपेंशन ऑफ आइडिया करते हैं। आपको एक टॉपिक दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में जिसका नाम है ऑल रोड्स लीड टू रोम। और एक दूसरा एक टॉपिक है यहाँ पे अ मैन विदाउट लिबर्टी इज अ बेबी विदाउट अ साउल। तो आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, इसका मीनिंग जो है कि देयर आर मेनी वेज टू रीच योर गोल। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा एक वर्क आपको करना है और फिर आप मुझे बताइए वैसे कि हाउ यू कैन डू द वर्क दैट इज फॉर यू, दैट इज टू एक्सपेंड द आइडिया। और 2 टॉपिक आपको किताब में वहाँ पे दिए हुए। उसके साथ में ब्लॉग राइटिंग के लिए एक आपको टॉपिक दिया हुआ है दैट इज मैन इज फ्री फ्रॉम बर्थ। ओके, सो ये टॉपिक के ऊपर भी आपको थोड़ा सा एक ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डू आस्क मी। कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, उसके बाद में लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही में आप हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। सो वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम। थैंक यू।